Hello kids, I'm back again with my new video of class 7 English chapter 7, the investigation of Vita-Wonk. Mr. Willy Wonk began by investigating Wonka White, which makes people younger. But Wonka White is too strong, so some people disappear. वो ऐसा मतलब मिस्टर विली वोंका बिगैन कर रहे थे इन्वेस्टिगेटिंग वोंका विट के बारे में। वोंका विट इतना स्ट्रांग था कि वो लोगों को यंग बना रहा था, और प्लस वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि बहुत लोग डिसअपेयर भी जा रहे थे बिकॉज द एज बिकेम माइनस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइनस में एज में चले जा रहे थे। वन पर्सन एक्चुअली बिकेम -87, एक पर्सन तो -87 हो गया। सो विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 ईयर्स। अब उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंटेड अ न्यू थिंग, मिस्टर वोंका सेड। सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मैं फिर से अपने स्लीव्स को रोल किया और काम करने बैठा। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन। एक बार फिर मैं अपने दिमाग में जोर डाला, न्यू रेसिपी के बारे में सोचा, एंड आई क्रिएट एज। और मैंने एज को क्रिएट किया टू मेक पीपल ओल्ड, ताकि मैं लोगों को ओल्ड बना पाऊँ, ओल्डर बना पाऊँ, ओल्डेस्ट बना पाऊँ। हाँ, आई क्राइड। For now the idea was beginning to come. What is oldest living thing in the world? सबसे ज़्यादा oldest living thing क्या है वर्ल्ड में? What lives longer than anything else? क्या है जो सबसे ज़्यादा लिव करता है? A tree, Charlie said. Charlie बोलते हैं a tree. Right, you are Charlie. But what kind of tree? लेकिन वो कैसा ट्री होता होगा? Not that Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, no, my boy. It's a tree called Bristol cone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find Bristol cone pine of Wheeler Peak today that was almost 4,000 years old. और कितना साल पुराना है? 4,000 years old. This is a fact, Charlie. Ask any dendrochronologist who like, and look at the word up in the dictionary when you get home. So that started me off. I jumped into the crane glass elevator and rushed all over the world collecting special item from the oldest thing. अब मैं पूरे वर्ल्ड जाने लगा जितने भी oldest thing है उनको collect करने के लिए. A pint of sap from a 4,000-year-old Bristol pine, a toenail clipping from 160-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich, an egg laid by 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga, a tail of 51-year-old horse in Arabia, a whisker of a 36 years old cat called Crumpet, an old flea which had lived on Crumpet for 36 years, a tale of 207 years old giant rat from Tibet, a black teeth of 97 years old Grimclean living in a cave of Mount Popka tea petal, the kum sorry the kukli bones of 700 years old Ketalu from Peru. So ये सारी चीज़ें अब मैंने इकट्ठा कर ली. All over the world, Charlie. Mr. Wonk went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something, from which one of them, a hair or an eyebrow or something. It was no more than an ounce or two of a jam. It was no more than an ounce or two of a jam scrubbed between its toes while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the bobbling, the shrike, the polyfrog, the giant curly, the singing sludge, and the venomous squirrel who can spit poison right into my eyes from 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now. Charlie, let me just say quickly that is the end. After a lot of boiling and bubbling, सारे मिक्सचर को मिलाने के बाद, बॉयल करने के बाद, बबल करने के बाद, in my investing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid.
मैंने प्रोड्यूस किया एक स्मॉल टाइनी कप फुल ऑफ ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप of it to the brave 20 years old Ompa Lumpa volunteer to see what happened. और उसको 4 ड्रॉप एक ब्रेव और 20 years old ओम्पा लुम्पा को दिया जो उसे वॉलंटियर कर रहा था ये देखने के लिए कि क्या होता है. What did happen? Charlie said. क्या हुआ फिर? It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shivering up all over, and his hair started dropping off and his teeth fall out. And before I knew it, he suddenly came in old. और मुझे पता चला धीरे धीरे वो तुरंत से विद द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वो एकदम ओल्ड हो गया और वो 20 years से 75 years का बन गया. एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंका इन्वेंटेड. और इस तरीके से वीटा वोंका इन्वेंट हुआ था. एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय रोल्ड डाल. I hope you liked it. Thank you.